academic procession is now entering. May I request you to please rise from your seats, all the fellows and the members, please rise from your seats and remain standing till the members of the procession reach their respective seats. May I request everyone to please rise from your seats. The recipients and the guests, the academic procession is entering the pandal. Everyone, please rise from your seats. The procession is now entering the pandal. Please rise from your seats. The academic procession is led by Professor Abdul Razak Sheikh, Registrar CPSP, and it is followed by Honorable Councillors, Professor Abdullah Muttaqi, Professor Hakim Ali Abro, Professor Abbas Maiman, Major General Wasim Ahmed, Professor Ambreen Afzal, Professor Abrar Ashraf Ali, Professor Muhammad Tayyab, Professor Jahangir Khan, Professor Sayyid Khalid Ahmed Ashrafi, Major General Professor Mazhar Ishaq, Professor Muhammad Masroor, the Treasurer, Professor Amir Zaman Khan, Director Medical Education, Professor Aisha Siddiqa, Vice President, Professor Muhammad Asghar Butt, Director General International Relations, respected guest of honor, Professor Masood Hamid, Professor Muhammad Shoaib Shafi, Senior Vice President, Professor Khalid Masood Gondal, our Honorable President, and our respected Chief Guest, Justice Retired Maqbool Babar, who is Honorable Chief Minister of Sindh. Please remain standing. I request all of you to please remain standing for the national anthem. Everyone to kindly take their seats. Now I request Professor Dr. Sayyid Khalid Ahmed Ashrafi, the Counselor of College and Convener of the 56th Convocation, to kindly take the rostrum. Thank you, Professor Nadia. I request the President of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, Professor Khalid Masood Gondal, to declare the convocation open. Bismillahirrahmanirrahim. I, Professor Khalid Masood Gondal, President College of Physicians and Surgeons, Pakistan, declare the 56th Convocation of College of Physicians and Surgeons, Pakistan open. Thank you, sir. Now I request Qari Sabiur Rahman to recite Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن
إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. तर्जुमा समाअत फरमा लें। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान मरदूद की। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए अपने रब का नाम लेकर जिसने सारे आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। ए रसूल आप पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो तमाम बातें सिखाईं जिसका उसको इल्म नहीं था, मगर इंसान सरकश हो जाता है जब वो अपने आप को गनी देखता है। बेशक इंसान को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। सच कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुलंद ज़ात वाला है। Jazakallah. Now for oath taking ceremony, all the recipients of fellowship and membership qualification are requested to rise from their seats for oath taking. Please rise from your seats. Please repeat the words of oath after me. In the name of God Almighty, I faithfully promise to maintain the traditions, the dignity, the standards and ethics of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, that I shall devote myself to those medical activities which come within the scope of my profession, that I shall follow those methods of prevention of disease, diagnosis, and treatment which, according to my ability and judgment, are consistent with best evidence medical practices. In this endeavor, I shall always strive to do no harm. When in doubt, I shall seek the counsel of my colleagues. I shall willingly assist others and advance knowledge in my specialty to the best of my ability. May God help me in this endeavor. Please remain standing. I request the President of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, Professor Khalid Masood Gondal, to admit them to the fellowship and membership of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. By virtue of the power vested in me as President College of Physicians and Surgeons, Pakistan, under Section 9, Subsection 2, Clause F, read with the Rule 11.1 of CPSP Act 1962, I admit you to the fellowship and membership of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and in token thereof, I present to you the diploma and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this diploma. Thank you. Thank you very much, sir. So you can take your seats now. I request the President of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, Professor Khalid Masood Gondal, to deliver his convocation speech. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Izzat-e-Maab, Chief Guest of today, Justice Maqbool Bakar Sahib, Chief Minister Sindh, Mohtaram Professor Masood Hamid Saab, Guest of Honor of today, Moses Fellow, Counselor, Office Bearer of CPSP, Parents of Fellows, Khwateen o Hazrat, Assalamu Alaikum. आम तौर पे इस कॉन्वोकेशन के मौके पे इंग्लिश में बात की जाती है, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है,
और जब आप उर्दू में बात करते हैं तो आप अपने जज्बात का इजहार बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कॉन्वोकेशन में आपसे चंद बातें उर्दू में की जाए। मैं मेहमानान ख़ुसूसी जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब और प्रोफेसर मसूद हमीद साहब और दीगर मेहमानान गिरामी को कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान के इस 56 कॉन्वोकेशन पे दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ कि अपनी बेपनाह मसरूफियत के साथ आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और फेलोज़ की इन खुशियों में शामिल हैं। और मैं इस मौके पे इन तमाम फेलोज़ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने कामयाबी के सफ़र को तय किया। लेकिन जहाँ मैं आज इन फेलोज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस हाल में बैठे हुए कुछ ऐसी अजीम शख्सियात को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जब ये फेलोज़ इम्तिहान दे रहे थे तो कुछ शख्सियात ऐसी थी जो रात को उठा करती थी, तहज्जुद के नफल पढ़ा करती थी, आप वाइवे के लिए जाया करते थे, वो तस्बीह लेके घर बैठा करते थे और वो आपके पेरेंट्स हैं। और मैं ये समझता हूँ आज हकीकी मुबारकबाद के जो मुस्तहिक हैं वो वालिदैन हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा कि वालिदैन वो ज़ात हैं जो चाहेंगे कि हमारी अपनी औलाद हमसे आगे जाए और दुनिया में वाहिद ये एक हस्ती ऐसी होती है जो औलाद को आगे जाना देखना पसंद करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के मकासद में जहाँ आप वो ओथ जो एडमिनिस्टर किया इसकी अमली तस्वीर बनने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का ये मकसद हयात बना लीजिएगा। माँ बाप की इज़्ज़त करना, असातिज़ा की इज़्ज़त करना, मरीज़ों की खिदमत करना, जब आपके ये मकासद होंगे आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। अब मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के तारुफ की तरफ आता हूँ। जनाबे चीफ गेस्ट मौजूद हैं। सर, ये इदारा मुल्क की आला तिब्बी तालीम का सबसे बड़ा इदारा 1962 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुआ। 3 इदारे बने, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। और ये विजन थी उस वक़्त के फाउंडर की लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, जिनकी विजन से आज ये इदारा इस मुल्क की कामयाबी की अलामत बन चुका है। आज सल्यूट करते हैं हम इस शख्सियत को। और इसके बाद जिन्होंने इस कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट किया, और मैं दुआ भी करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान फारूकी और उनकी काउंसिल ने इस कॉलेज के लिए बहुत काम किया। फिर प्रोफेसर जफला चौधरी आए। हर एक का मकसद था कि दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी दी सक्सेस स्टोरी ऑफ द कंट्री और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद करे। ये इदारा भी कर रहा है, आप लोग भी उसी अंदाज में नाम बुलंद कर रहे हैं। सर, मैं यहाँ ये तज़किरा करना मुनासिब समझूंगा कि जब इस कॉलेज का आगाज़ हुआ तो वी हैड ओनली 2 फेलोशिप प्रोग्राम। आज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी दिस कॉलेज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस कंट्री मोर देन 50,000 स्पेशलिस्ट, हमारे 35,000 से ज़्यादा फेलोज़, 15,000 के करीब हमारे मेंबर्स, हमारे 5,600 के करीब सुपरवाइज़र इस प्रोग्राम को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और 400 प्लस इंस्टीट्यूशन जहां ये बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 300 प्लस पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में, नेपाल में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, आयरलैंड में जाएं, यूके में जाएं, एक्रीडेटेड इदारे मौजूद हैं। इस इदारे के तलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम ऑफ दोज कंट्री। लेकिन वहाँ तालीम हासिल करने बाद कंपल्सरीली दे कम बैक टू पाकिस्तान, फिर पाकिस्तानी अवाम को सर्व करते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, करेंटली कॉलेज इज़ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे प्रोग्राम हैं इनकी तादाद 86 के करीब है, जो दुनिया में मैक्सिमम है एंड कंपेरेबल टू द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा। 50 हमारे प्रोग्राम फर्स्ट फेलोशिप जो कि 5 साल के हैं, and rest are the second fellowship program. So as far as the number of fellowship program they are concerned, College of Physician Surgeon Pakistan is number 1 postgraduate institution in the world. माजी में सर कॉन्वोकेशन का आगाज़ कराची होता था, फेलोज़ की तादाद कम थी। इसके बाद ये कॉन्वोकेशन
हम लेके गए तमाम प्रोविंशियल सेंटर पे, और आज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इस साल में 752 फेलोज़ को डिग्रीज अवार्ड की जा रही हैं, 160 मेंबर्स को डिग्री अवार्ड की जा रही हैं, और जिन्होंने बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस की वो 3 गोल्ड मेडलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। और कॉलेज की तरक्की का जो सफ़र है वो तसलसल के साथ 1962 से जारी है। और मैं अपने इंटरनेशनल प्रोग्राम में सर 2 प्रोग्राम में मेंशन करना चाहूँगा। एक आयरलैंड का प्रोग्राम जहाँ 13 डिसिप्लिन है, वहाँ 567 बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। और इसी तरह यूके के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में, जिसमें यूनिवर्सिटी बर्मिंघम मेन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी है, 300 प्लस और 474 ये बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम करते हैं जूनियर फेलोशिप में IMM का 2 साल के लिए जाते हैं, सीनियर फेलोशिप में एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 2 साल काम करते हैं, फिर 2 साल के बाद कंपल्सरीली दे हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। ये तकरीबन 50 के करीब हर 6 माह में जाते हैं, और वहाँ इनका रिटर्न रेट 100% है। जिन इदारों के साथ हमारा मुआहदा हुआ, जब उन्होंने हमें कहा कि अच्छे बच्चे आप यहीं छोड़ दें, तो हमने कहा नहीं, एवरीबडी हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि वी डू नॉट बिलीव इन द ब्रेन ड्रेन। तो इसलिए WHO ने स्कीम का नाम दिया कि ये एक ऐसी स्कीम है जहां डेवलपिंग कंट्री का मुआहदा है डेवलप कंट्री के साथ। तो WHO ने अपने पेपर में लिखा ये वो स्कीम है जिसमें एक्चुअल ब्रेन गेन है एंड नॉट द ब्रेन ड्रेन। और ये बच्चे जो वहाँ जाते हैं, वी आर रिसीविंग द बेस्ट पॉसिबल फीडबैक of these training and these fellow, and they are the real ambassador of Pakistan. They are the real ambassador of College of Physicians and Surgeons Pakistan. और सर आपको जान के खुशी होगी, 14 अगस्त 2022 लास्ट ईयर सब्ज हिलाली परचम के साथ हमारा सऊदी अरब नेपाल में सेंटर था, यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में सेंटर इनाग्रेट किया गया कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का। और एक डबल स्टोरी बिल्डिंग बर्मिंघम में मौजूद है, ये कोने पे नज़र आ रही है, उसके बाहर लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी आर हैविंग आवर रेगुलर थियरी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। और 9 सितंबर का दिन, 9 सितंबर 2023, ये एक यादगार दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब हमारे 70 फेलोज़ ने कहा हम FCPS जहाँ रह के कर चुके, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कन्वोकेशन करते हैं, ये सेंटर फंड्स खुद जनरेट कर रहा है। और यहाँ मैं मेंशन करना ये चाहूँगा कि CPSP इज़ नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम प्रोविंशियल और द फेडरल गवर्नमेंट, ये काउंसिल बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये फेलो इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। और हमारे इंटरनेशनल सेंटर सेल्फ फाइनेंस है, वहाँ जब कॉन्वोकेशन का फैसला किया गया तो 9 सितंबर 2023 में कॉन्वोकेशन हुई। ऐसी ही खूबसूरत वो तकरीब थी, 70 फेलोज़ फेलोशिप ले रहे थे। और फिर वहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडनबरा का प्रेसिडेंट मौजूद है, ग्लासगो का प्रेसिडेंट मौजूद है, लंदन का प्रेसिडेंट मौजूद है, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इटसेल्फ। ये वो खूबसूरत हाल है जिसकी तस्वीर सामने नज़र आ रही है। और तकरीब ग्रेट हॉल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में थी, और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का तराना और पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा था। ख्वातीन हज़रात, कॉलेज अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। हम ये समझते हैं कि ये हमारे सारे डॉक्टर्स केयरिंग भी हों, कॉम्पिटेंट भी हों, कंसिडरेट भी हों, और हमारी क्वालिफ़िकेशन मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर नंबर 1 होनी चाहिए। जो मेयार तरबियत है वो दुनिया के बेहतरीन इदारों के हम पल्ला होना चाहिए। एंड आई वेरी प्राउडली से हम पल्ला हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन रिकग्नाइज है इन द डेवलपिंग कंट्री एंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी मुल्क का नाम लें, वहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के फेलोज़ मौजूद हैं। क्यों? हमें पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है। कनाडा ने स्टार्ट किया कैनमेड, अमेरिका ने स्टार्ट किया ACGME कॉम्पिटेंसी, यहाँ स्टार्ट हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। हमारी फैकल्टी ने जब काम किया तो उन्होंने कहा देयर आर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। वो चैलेंज इंडक्शन के भी थे, वो करिकुलम के थे, वो मॉनिटरिंग के थे, वो ईवैल्यूएशन के थे। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाई गई। और 31 मार्च को जब हमारी फैकल्टी बैठी तो उन्होंने कहा जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं
जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस है। इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल बने, लॉन्ग टर्म गोल बने। शॉर्ट टर्म गोल में वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट और नई इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आए। उनकी तफासिल में मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि कॉलेज बिलीव इन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरिट के साथ इंशाल्लाह हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। CPSP की कुछ अहम खसूसियात हैं, जिसमें इदारे की खुद मुख्तारी के साथ सेल्फ फाइनेंसिंग है और फंड्स के बगैर 14 रीजनल सेंटर और इंटरनेशनल सेंटर जिनकी वीडियो कनेक्टिविटी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वेरियस मीटिंग्स एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ के लिए, वो तसलसल के साथ काम कर रहे हैं। और एक कॉलेज की एक और ब्यूटी सर ये है, हम मुल्क में इलेक्शन की बात करते हैं, ये कॉलेज की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। 1962 की वो वीएन जनरल वाजिद अली बरकी सर, इस कॉलेज का इलेक्शन हर 4 साल का बाद के होता है। कौंसल इलेक्ट होती है, ऑफिस बेरर इलेक्ट होते हैं, और 4 साल ये फेलोज यकजान होके कॉलेज के लिए काम करते हैं। एक दिन के लिए ना हमारा इलेक्शन पोस्टपोन होता है, ना इस इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत होती है। हर फेलो हमारा कॉलेज का अलमबरदार है, कॉलेज के लिए सिंसियर है। दैट इज़ वाई द कॉलेज इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस कंट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सर, आपकी मौजूदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, और आप शोबा सेहत में इस सूबे में बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, और हमारी बहुत दुआएं आपके साथ, और आपके साथ आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर मसूद हमीद साहब, मैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से इन्हें जानता हूँ, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक में है, रिसर्च में है, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए दे आर अनप्रेसिडेंटेड। अगर आप समझते हैं किसी टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए और किसी टीचर को एक लीडर एकेडमिशियन होना चाहिए, मसूद हमीद साहब की मिसाल हमारे सामने है। इंटरनेशनल कॉलेज बना, नर्सिंग का बना, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तरक्की की, फाउंडर वाइस चांसलर में इनका शुमार है, और मैं ये समझता हूँ ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट वाइस चांसलर ऑफ दिस प्रोविंस एंड द रोल मॉडल फॉर ऑल द वाइस चांसलर ऑफ द कंट्री। आपका भी आना सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी पे। और मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं इस वक्त उन तमाम की तफसील में जाए बगैर सिर्फ ये बतला सकूँ कि आर ऑल एक्टिविटीज़ दे आर एक्रीडेटेड बाय एक्रीडेशन काउंसिल फॉर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। ये सर्टिफिकेट है 2026 तक का, और पिछले 2 माह में मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर ग्राहम से, जो प्रेसिडेंट है एक्रीडेशन काउंसिल फॉर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेसर जेम्स से जो प्रेसिडेंट है एक्रीडेशन काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी, उनके प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, और इंशाल्लाह हम एक कोलैबोरेशन के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने कराई 2022 में, और 2024 फरवरी 28 को वी आर गोइंग टू हैव द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन, जिनमें रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट भी होंगे, जिनमें इंटरनेशनल बॉडीज़ के प्रेसिडेंट भी होंगे, और इन तमाम फेलोज़ को और मेहमानान गिरामी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि डू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्वोकेशन, और एक कोलैबोरेटिव वर्क की बेहतरीन मिसाल आप सामने देखेंगे। और आखिर में जहाँ मैंने उर्दू में बात की, लास्ट पैरा मेरा इंग्लिश में है। सर, इस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट टू मेंटेन एंड इंश्योर its continuous progress is even more difficult. Each successive council of the college has made a significant share in the progress of the college and translating the vision of the college into tangible reality. The present council is determined to consolidate the advances already made and to explore more area which could further improve its training program as well as specialist care in the country. We expect and hope the medical profession and the nation as a whole will stand by our side to support CPSP in its effort toward achieving further excellence in postgraduate medical education and putting into place an effective and efficient specialist care for our people. Ladies and gentlemen, I will conclude my speech by thanking you once again and His Excellency the Chief Guest and the Guest of Honor, और फिर मैं इस मौके पे कहूँगा इन नौजवान फेलोज़ के लिए मेरी बहुत दुआएं फ्यूचर एंडेवर के लिए। आपने फर्स्ट फेलोशिप किया, आप सेकंड की तरफ जाएंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएंगे,
आज के ओथ को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा और वो जो वालिदैन आपके बैठे हैं इनकी खिदमत को मकसद हयात बना लीजिएगा। इनकी असातिज़ा की इज़्ज़त और अपने इनकी इज़्ज़त और असातिज़ा की इज़्ज़त अपनी ज़िंदगी का एक मकसद हयात रखिएगा। और याद रखिएगा पैसा तो अल्लाह देगा। वो जो 3 भाई हैं, रुपया पैसा इनफैक्ट साथ छोड़ देता है जब जिस्म और रूह का ताल्लुक़ ख़त्म होता है। अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार चंद साल याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। आपके साथ इन माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं, आपके फलाही काम होते हैं, आपकी पेशेंट के लिए की हुई खिदमत होती है। मरीज़ों की खिदमत अपना मकसद हयात बनाइएगा। किसी एक दुखी इंसानियत के हाथ उठ गए, दुआ ऊपर चली गई, आपकी दुनिया भी बन गई, आपका आखिरत भी बन गई। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ। बहुत मुबारक आपको हो, आपके पेरेंट्स को मुबारक हो, और चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for this enlightening speech, sir. Now I request the guest of honor, Professor Dr. Masood Hamid Khan, to kindly deliver his speech. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest, CM Sindh, Honorable President, Council Members, Office Bearers, CPSP, graduating fellows, members, parents, spouses, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am honored today to be invited to attend and address this august gathering. CPSP, since its establishment in 1962, has been performing a very important role in supporting postgraduate medical education and healthcare, not only in Pakistan, but also in the region. I would like to pay tribute to the past presidents, council members, office bearers of CPSP, just to name Professor Wajid Ali Barki Saab, Professor S.M. Rab, Professor Ejaz Ahsan, Professor Khwaja Sadiq Hassan, Professor Zafar Hayat, Professor Sultan Farooqi, and Professor Zafarullah Chaudhry. However, we have observed an exponential growth recently in the performance of CPSP, for which I would like to congratulate the galaxy of intellectuals right now under the leadership of Professor Khalid Masood Gondal. Sir, I would like to congratulate you for the endeavors for continuing the progress of College of Physician Surgeons ahead. I would like to address to the graduating fellows and members, and would like to share my experience for your guidance. I graduated from Dow Medical College in 1978 and did my MCPS in 1981, that is 42 years from now. And then I did my FCPS Part 2 in 1983, that is almost 40 years. Now I would like to suggest to all of you that please always remember the person who has done any good thing, good deed to you. And those people are the first, as Mr. President has rightly mentioned, nobody else than your own parents, then your teachers, then the country and institution, after Almighty Allah's blessings. Now, how to remember the good deeds which your parents, your teachers, they have done to you? My Honorable President CPSP has already mentioned the sacrifices for the parents have been giving to educate you. But I would like to mention that to me, and I would like to suggest the best way to remember them is to do Sadqa-e-Jariyah for them. Not only for your parents, but also for your teachers also. Because these are the two personalities who always feel happy when you excel them. To the institutions, like our country, like
These institutions, College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and other institutions, these institutions, they bring a change in the socio-economic status of those people who are graduating. And I think I would request you that please try to do some positive contribution towards your country, towards your institutions, and if you cannot do that, please at least try not to do any harm to these institutions and your country. That would be the best possible what you can do. Then you and your family comes first. And this is my experience. You and your family comes first. Don't ignore your health and the health of your family members. This I very commonly observed, that we as physicians, we start treating our patient very nicely, but we forget ourselves. We do not know about our numbers, about our weight, about blood pressure, or so on and so forth. So I would recommend that at least, besides recommending to your patient, you will go in for an annual medical checkup for all the screenings, including to your metabolic, to your cancer status, and so on and so forth, because a healthy doctor can only treat patients nicely. Even if you have headache, you cannot treat your patient. So my request is that please go ahead with that. Now, future is what? Your future is what you are doing today. If you are doing good things today, they will come tomorrow to you as your future. And in the end, I would like to say a few things about end of life. And end of life, we should all be prepared for end of life. And at that moment, how many plots we have, how much knowledge we have, it will all remain in this world. There is no point, I have always been saying, going to the grave rich in money and knowledge. Please share your wealth, share your knowledge with the people around you. May Allah bless us all. Pakistan Paindabad. Thank you very much, sir, for your motivating and scholarly speech. Now I request the Honorable Chief Minister, Mr. Justice Maqbool Bakar, Chief Minister of Province of Sindh, to kindly deliver his speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Professor Masood Hamid Khan Sahib, the guest of honor. Professor Khalid Masood Gondal, President, CPSP. Professor Muhammad Shoaib Shafi, Senior Vice President, CPSP. Professor Aisha Siddiqa, Vice President, CPSC. Professor Irshad Waheed, Secretary, CPSP. CPSP Counselors and Fellows, Dr. Mansoor, Secretary Health, members of the medical profession, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of great pleasure for me to be here today and to address this congregation of the 56th convocation of College of Physician and Surgeon, Pakistan. I wish to thank the President CPSP, Professor Khalid Masood Gondal, and the Council for inviting me to the occasion to share my thoughts with you. I would like to first congratulate the passing out batch of specialists of the college and their parents too, and hope that they, like their predecessors, would invest their energies and expertise towards alleviating the sufferings of the people of this country. Ladies and gentlemen, President of the college has rightly emphasized that the nation's strength lies in the quality of its institutions. I am pleased to acknowledge the College of Physicians and Surgeons, Pakistan, as one of such noteworthy institutions in the country.
which is making commendable strides in postgraduate medical education at both national and international level. Although educational institutions thrive with academic and administrative autonomy, however, I propose the inclusion of social responsibility as a fundamental aspect. Institutions should be rooted in a sense of duty towards society, with public awareness of their utility and assurance of the safety and efficacy of their outputs. This is particularly significant for medical institutions and the custodian of medical profession. They bear the weighty responsibility of ensuring that graduates not only apply their knowledge and skills effectively, but also demonstrate empathy in providing relief to those in need. I wish to remind all members of the medical profession, especially those embarking on their career, that the people of this country, much like your parents and families, have made sacrifices to support your journey into the esteemed field of medicine. It is my hope that you will uphold the expectations placed upon you and maintain the trust and confidence bestowed upon the medical profession by the nation. Dear audience, I am delighted to be informed about the accomplishment of the college and express my hope for the continuous advancement of the institution for bringing greater accolades to the nation. The destiny of CPSP rests in the hands of the young specialists who have recently graduated or will do so in the future. The college should now focus on equipping this generation not only with professional competence, but also with the values intrinsic to this noble profession. It is important to mold their character through positive role modeling, fostering attributes that enable them to serve the profession and the country with utmost dedication and capability. Hence, I extend my sincere wishes for success in all your noble endeavors. In the end, I would like to thank the CPSP Council once again for providing me the opportunity to be part of this auspicious occasion and share my thoughts with me. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for a visionary speech. The College of Physicians and Surgeons Pakistan upholds the tradition of presenting gold medals to its exceptional fellows. For the gold medal in pulmonology, I invite Dr. Sadhna Priya to come on the stage. I request Professor Dr. Muhammad Masroor, Counselor and Treasurer of CPSP, to kindly recite her citation. And I now request the Honorable Chief Guest to kindly award her gold medal. Assalamu alaikum. Professor Zakaullah Beg medal is sponsored by Professor Zakaullah Beg and has been awarded since 1996. It is awarded to a fellow who achieved the highest marks in the FCPS examination in the discipline of pulmonology, provided that these marks are not less than 70% and all CPSP examinations have been cleared on the first attempt. The medal is awarded to Dr. Sadhna Priya, a graduate of Dow Medical College. She completed her residency at Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, under the supervision of Professor Nausheen Ahmed, and successfully passed the final FCPS examination in pulmonology in March 2022 session, achieving a remarkable score of 75%. Dr. Sadhna Priya to receive the gold medal in pulmonology. Thank you.
The next gold medalist in the discipline of general surgery, I will invite Dr. Harim Fatma Hussain to come on the stage. And I will request Professor Abdullah Muttaqi, Counselor CPSP, to kindly read the citation. Thank you, Professor Masroor. This medal is sponsored by Professor Zafarullah Chaudhry since 2001. It is awarded to a fellow who secures the highest marks in the FCPS examination in the discipline of surgery, with the proviso that such marks are not less than 70%, and all CPSP examinations have been passed on the first attempt. The medal is awarded to Dr. Harim Fatma Hussain. She graduated from Dow Medical College, completed her residency at Dow University of Health Sciences at Civil Hospital, Karachi, under the supervision of Professor Muhammad Zubair, and successfully passed the final FCPS examination in the August 2022 session, securing 71% marks. I request Dr. Harim Fatma Hussain to proceed for her gold medal, please. The third gold medalist in the discipline of medical oncology, I will invite Dr. Saqib Raza Khan to come on the stage and request Professor Dr. Amreen Afzal, Counselor CPSP, to recite citation. Thank you, Professor Masroor. Lieutenant General Wajid Ali Barki Medal. This medal was sponsored by Lieutenant General Wajid Ali Barki in January 1969. It is awarded to a fellow who scores the highest marks among all the discipline of FCPS examination, with the provision that such marks are not less than 70% and all the CPSP examination have been passed on the first attempt. The medal is awarded to Dr. Saqib Raza Khan. He graduated from Sindh Medical College, Karachi, completed his residency at Aga Khan University Hospital under the supervision of Dr. Yasmin Abdul Rashid, and passed the final FCPS examination in the discipline of medical oncology in March 2022 session, scoring 84% marks. Congratulations, and proceed towards Chief Guest. Congratulations to gold medal recipients. The next part is conferment of MCPS Health Profession Education Diplomas by Chief Guest. CPSP has assumed a leadership role all across the discipline and domain of medical and dental specialties, including the crucial field of medical education. As early as 2004, College of Physicians and Surgeons Pakistan pioneered the introduction of discipline of health professional education in Pakistan. Over the years, hundreds of doctors have graduated in this specialty, and they are now contributing their expertise to medical education department of various institutions nationwide. I will now extend invitations to these esteemed medical educationists one by one to join on stage. I humbly request the Honorable Chief Guest to present them with the well-deserved diplomas. First recipient is, I am proud to announce the name of Professor Saeed Khalid Ahmed Ashrafi. He is a professor of ENT and president of Pakistan Society of ENT. He is the counselor of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and convener of 56th Convocation, which is this one.
He is the former Vice President, Treasurer, and Registrar of CPSP. The next recipient is Professor Syed Danish Hussain Ahmed. He is the Professor of Biochemistry at Dow University of Health Sciences. Congratulations, Professor Danish Hussain. Please proceed towards the chief guest. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Mohammad Masroor, our treasurer, to kindly take the rostrum. Thank you. Now is the time for the pleasant tradition of giving shields to the Honorable Chief Guest and the Guest of Honor. I will request the Honorable Chief Guest, Mr. Justice Maqbool Bakar, Chief Minister of the Province of Sindh, to kindly award the College Shield to the Guest of Honor, Professor Dr. Masood Hamid Khan. I am honored to request the President CPSP, Professor Khalid Masood Gondal, to kindly present the College Shield to the Honorable Chief Guest, Mr. Justice Maqbool Bakar, Chief Minister of the Province of Sindh. Thank you, sir. Khawateen wa Hazrat, due to prior commitment, worthy chief guest will now leave the Pandal. On behalf of the President and the Council of the CPSP, we would like to extend our deepest gratitude to his presence, which has definitely made this ceremony a memorable one. Thank you, sir, very much. Now we will start the distribution or award of the degree by the President and Senior Vice President and Vice President of the College to the recipients, fellows first of all, and then followed by to the members. You are the in the discipline of anesthesiology, Dr. Abdul Kaleem. आप चले जाइए आगे जाइए. तो आप पहले मुझे पेन वगैरह दें यहाँ पे रखें मेरे पास. डॉक्टर अदील हुसैन. Dr. Iftikhar. Dr. Iftikhar. Dr. Iftikhar Shah. Arham. Mohammad Arham Shahid. एक मिनट क्या है? ठीक. डॉक्टर मोहम्मद खालिद. अरसल कौन? ठीक. डॉक्टर अरसला रहमान.
Dr. Muhammad Muazzam Ali. Dr. Muhammad Swaleh. Nihal. Dr. Nihal Siddiqui. Dr. Poonam. Rafia. Dr. Rafia Bano. Dr. Ramiz Ali. Dr. Samia Mubin. Dr. Samra. Dr. Samra Shafqatullah. Dr. Sara Nadia Abbas. नहीं ठीक अच्छा डॉक्टर सिद्रा है ना डॉक्टर सिद्रा कुरैशी सॉरी डॉक्टर सिद्रा कुरैशी डॉक्टर सोरत डॉक्टर सुमैया कौसर डॉक्टर संदीप कुमार अच्छा ठीक है डॉक्टर तूबा मुगल डॉक्टर मारिया हाशमी डॉक्टर मारिया हाशमी हाँ हाँ डॉक्टर ज़ारा रिजवान In the specialty of the breast surgery, there are two fellows, Dr. Rabia Niaz, Dr. Sayyida Sakina, Dr. Sayyida Sakina Abdi, in the discipline of cardiac surgery, there are four recipients, Dr. Amir, Dr. Amir, Dr. Muhammad Arif, Dr. Naveed Naik, Dr. Saifullah, in the specialty of cardiology, we have, mashallah, many recipients. Dr. Abdul Bari Babar, Dr. Abdul Hamid,
डॉक्टर साहब पूरा नाम बताइए। डॉक्टर अब्दुल मोइज़। डॉक्टर अमरीन। डॉक्टर अकील अहमद। डॉक्टर असद रज़ा। बिलावल। डॉक्टर बिलावल। जी कार्डियो। डॉक्टर दानिश यार। पीछे पता नहीं आवाज़ जा रही। डॉक्टर दानियाल मुसद्दक। डॉक्टर दानियाल मुसद्दक। डॉक्टर दीपक लाल। डॉक्टर एजाजुल हक। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद असद बकाई। हाँ बेटा हन्ना डबल डबल हन्ना। डॉक्टर हना नईम। अबरार पढ़ती इबरार पढ़ती। ठीक। डॉक्टर इब्रार हुसैन। इफरन। ठीक। डॉक्टर इफ्रा उरूस। ख्याल है हम चलें ये हो जाए। नहीं जब अपनी अजान होगी मैं रोक दूंगा ना। आपका क्या नाम है? जवेरिया। डॉक्टर जवेरिया मकसूद। हाँ ठीक सही है। डॉक्टर कामरान खान। डॉक्टर खदीजा सरवत फारूकी। डॉक्टर मदीहा फातिमा। डॉक्टर मलीहा जावेद। हाँ सॉरी डॉक्टर मलीहा जावेद। डॉक्टर मोहम्मद अदील। डॉक्टर मोहम्मद अदील। कितना टाइम टाइम क्या हुआ? बस फिर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कामिल। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कामिल। डॉक्टर मोहम्मद दानिश इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद फारूक। आप जाइए मोहम्मद फारूक। डॉक्टर मोहम्मद इबाद सिद्दीकी। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर जाहिद। जी सही है।
जी 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 कर लिया। डॉक्टर पारस नज़ीर। आप सद्दाम हुसैन? ठीक। डॉक्टर सद्दाम हुसैन। डॉक्टर सलमा। डॉक्टर शफीक अहमद। डॉक्टर शाहजेब। डॉक्टर शाकिर ज़ादा। डॉक्टर श्वेता श्वेता डॉक्टर श्वेता कुमारी। डॉक्टर सोनिया बाई। डॉक्टर सुमैया। डॉक्टर सैयद गाजी अब्बास रिजवी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद वक़ार। डॉक्टर सैयद यासिर शाह। अब उमामा उमैमा उमामा ठीक है। डॉक्टर उमामा यासीन। डॉक्टर साहब वंदाना नाम गलत नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर वंदाना। डॉक्टर वहीद अहमद। डॉक्टर वजाहत रहमान। डॉक्टर वज़ीर हुसैन। डॉक्टर यास्मीन। In the discipline of cardiothoracic anesthesia, there is only one recipient, Dr. Mohammad Abdullah. In the specialty of chemical pathology, there are 5 recipients, Dr. Asma Khan, first one. डॉक्टर रूमा सिकंदर। मैं सिराजी मुनीर पढ़ूंगा। सिराजी मुनीर पढ़ूंगा। डॉक्टर सिराजी मुनीर। डॉक्टर तैयबा आशिक। डॉक्टर तैयबा हसन।
In the specialty of clinical cardiac electrophysiology, there are two recipients, Dr. Ghulam Kubra, Dr. Sajid Ali. In clinical hematology, we have four recipients, Dr. Asma Akram, Dr. Asma Akram, Dr. Javeriev Ashfaq, ठीक है, sorry. Dr. Rekha Kumari, Zaratul Ain, अलग अलग है मिला के ज़रतुल ऐन चल नहीं मिल डॉक्टर ज़रतुल ऐन बशीर डॉक्टर ज़रतुल ऐन बशीर इन कम्युनिटी मेडिसिन नहीं है अच्छा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन जी कम्युनिटी मेडिसिन में है डॉक्टर आफरीन सादिया इन कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर आफरीन सादिया क्रिटिकल केयर इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर लारा रुख तैमूर डॉक्टर मोहम्मद शुएब आरिफ सुहेब आरिफ डॉक्टर मोहम्मद सुहेब आरिफ in the specialty of dermatology Dr. Habibullah Dr. Kiran Naz Khan Dr. Maria Abid Dr. Maria Abid Dr. Maria Nasir Dr. Palvasha Nasir Jalil sorry Dr. Palvasha Jalil Dr. Rao Muhammad Tahir Sattar Dr. Sabika Raza Kerwala Dr. Saima Dr. Sidra Tariq in the specialty of diagnostic radiology Dr. Amna Gilani Dr. Abid Hussain Dr. Anil Kumar Dr. Anita Dr. Ashok Kumar Dr. Ayatullah Ruhullah Khomeini
Dr. Chandni. Dr. Faiza Ambar. Dr. Farah Naz. Dr. Farwa Mohsin Ali. Dr. Faryal Gauhar. Dr. Hasib Rahman. Dr. Hina Rana. Dr. Jia. Dr. Muhammad Asadullah. Dr. Muhammad Imran Somro. Dr. Muhammad Raza. Dr. Naila Ikram. Dr. Nazish Iqbal. Dr. Nida Asad. Dr. Sadia Ali. टाइम बताइए। डॉक्टर सारा बलोच। 5 मिनट बाद हम ब्रेक करते हैं, मेरे ख्याल ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। डॉक्टर सारा वकार। ये ले लेता हूँ फैमिली मेडिसिन। डॉक्टर शबाना। डॉक्टर शफक एजाज मेमन। डॉक्टर सिबगा खान, सॉरी, डॉक्टर सिबगा खान। डॉक्टर सैयद मुबशिर जावेद। In the specialty of emergency medicine, we have 4 CPNs. इसके मतलब के बाद ले लीजिए। डॉक्टर आयशा अब्बासी। डॉक्टर सुमैया तौसीक खान। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुस्तहसन, सॉरी, डॉक्टर सैयदा बरीहा जहरा तकवी। डॉक्टर सैयदा बरीहा जहरा तकवी। In the discipline of endocrinology, we have got 4 CPNs. Dr. Abdul Aziz.
Dr. Muhammad Salim, Dr. Rahmatullah, family medicine server. नहीं ये भी करूँगा मैं, दो और करूँगा, ये दो अगले जो है ना, दो डॉक्टर सरवत नचम अंजुम, डॉक्टर सरवत अंजुम, ये कर लेते हैं बस, ये दो, बस 5 करके ख़त्म. In the discipline of family medicine, we have got 5 recipients. Dr. Noor Seher. Dr. Rabia. Dr. Rabia. Dr. Rabia Tawfiq Lodhi. Dr. Sahirish Habib Mehman. Dr. Tayyaba Moeen. Dr. Wajiha Naveed. With this, we'll take a break for Maghrib prayers, and gents can go to the mosque, and for the ladies, you can move to the nearby guest rooms. Thank you very much. We will, inshallah, resume at 6 o'clock.